So in essay writing, this particular topic is something which is mostly misunderstood by most of the students. To what extent do you agree or disagree? Basically, you need to understand when there's or, okay, or means there's a choice, okay? And whenever there's a choice and there's to what extent, it's like they're asking me, oh, so on a range of 0 to 100, can you rate this? So not necessarily we are rating as 0 or 10, right? It can be 0, it can be 3, it can be 5, it can be 7, it can be 10, right? So I have different options. So I might say I completely agree. Okay, मेरा first choice क्या है? I completely agree. Agree. ऐसा ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं है. Okay, और I might say I somewhat थोड़ा बहुत लग रहा है, हाँ सही लग रहा है, पूरा नहीं सही लग रहा है लेकिन ओके यू कैन से हाँ मतलब ठीक है पर थोड़ा मुझे दिक्कत है थोड़ा सा, दैट मीन्स आई विल से आई समवट डिसएग्री. ओके एंड अदरवाइज आई विल से आई कंप्लीटली डिसएग्री. ये कंप्लीट नॉनसेंस है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी फायदे नहीं है इसके. वॉट एवर यू आर टेलिंग मी इज ऑल द डिस्कम्फर्ट, डिसएडवांटेज, निगेटिव. ऑलराइट, सो फ्रॉम कंप्लीटली अग्री टू कंप्लीटली डिसएग्री जर्नी के बीच में दो है, समवॉट एग्री समवॉट डिसएग्री. इसके लिए तुम लोग ने एक भी पकड़ा तो भी चलेगा, दैट आई समवॉट एग्री, 50-50 ऐसे दिमाग में या तो भी चलेगा. बट you need to understand we have a choice only when the question says to what extent. To Okay, what I'm extent? repeating myself. जब भी question में to what extent रहेगा तभी ये 4 choices है. Okay, जब भी question में to what extent नहीं है तभी first choice do you agree, yes I completely agree, do you disagree, yes I completely disagree. इतने ही दो choices है. Do you understand? Yes. हाँ, alright. So now when I have to take a side, देखते हैं हम लोग अलग अलग साइड्स में कैसे कैसे ऐसे लिखेंगे. So you need to understand when I completely agree, alright, I am not favoring the topic, but I am saying कि लोग बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है. And then you tell what is the other side. Okay, why do you agree to this? लोग disagree करते हैं, मैं नहीं करती हूँ. Alright, this is how you'll fill it up. So we need to understand the question first. Always focus on the question. Most of the time people are worried about the template, vocabulary, grammar, और question पढ़ने में time नहीं देते. When you reread the question twice or thrice, तभी जाके आपको question अच्छे से समझ में आता है. Otherwise you are in the panic situation. Okay? So तभी गड़बड़ हो जाता है. Yes, I'm recording it, Pooja, and try to be in. Okay? Keep your internet connected. All right. So university education should be free for all students. Now, image building करना, अपने visualizations of graphic अच्छे होने चाहिए. The moment you think of university education, बड़े बच्चे दिखने चाहिए. Okay, the moment you think free, आपको पैसा दिखना चाहिए और उसके ऊपर cross दिखना चाहिए. Okay, for all students, that means you see 100% kids. Okay, सारे teenagers दिखने चाहिए. All right. And now something is bothering you. नहीं नहीं सबके लिए क्यों होना चाहिए? So Sajali saying नहीं नहीं सबके लिए free क्यों? जो भर सकता है पैसा भरने दो, right? Let the rich people pay for it. That's what probably he's trying to tell us. Okay. Yeah. So now let's understand how do I write the essay. Okay. So let's now go for one. एक कौन सा तो हम लोग लेते हैं. First we'll say completely agree. Okay. Completely agree. Let's try to understand what do I completely agree and why. Okay. The moment I say I completely agree, सामने वाला पूछेगा क्यों? Why? What do you have to say about this? ऐसे क्या तुमने सोचा कि तुम्हें लगता है कि ये सही है? Right? So I have to give my explanation. So why means I have to give my explanation. The moment I give my explanation, the person will ask you, how do you know? Okay? How do you know this? ये सही है, गलत है, तुमने कहाँ पढ़ा ये? Okay? The moment I explain this, सामने वाला पूछेगा, तुम्हें कैसे पता है ये? Okay? Then I have to give some kind of example. Okay? Some reference कि मैंने पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? एक सर्वे में पढ़ा है. Okay? एक स्टडी में पढ़ा है, एक रिसर्च में पढ़ा है, राइट? सो सॉरी, रिसर्च. सो आई हैव टू गिव सम रेफरेंस. ओके, कि मैंने कहाँ पढ़ा है. एक केस स्टडी, ये मेरे साथ हुआ है. यू कैन गिव सम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो. ऑलराइट, यू कैन गिव जेनरिक एक्सपीरियंस कि जनरली इंडिया में ऐसा होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज में ऐसा होता है, जनरली ऑफिसेस में होता है. यू कैन गिव जेनरिक, बट somebody is going to ask you how do you know, how can you say so? ऑलराइट, तो आपको क्या देना है? कुछ रेफरेंस देना है. टॉपिक ओवर. ठीक है, एक ही रीजन है. सो नो, यू हैव टू गिव अनदर रीजन. ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि अग्री क्यों होना चाहिए, क्यों करना चाहिए? यू हैव टू गिव अनदर रीजन, अनदर एक्सप्लेनेशन.
and another example. इसको बोलते हैं हम लोग supporting details. Supporting details. You know, Details. yeah, supporting details means what? You are convincing a person to take an action or to believe that you're true. And when you're convincing somebody, this skill of conviction is based on how strong your supporting details are. Okay. So, for example, as simple as Amita visits this place in Dapoli and it's a resort, and if she has to tell Divya, Sajal, Pooja, and अरे तुम लोग ने भी ना ये रिसोर्ट में जाना चाहिए, will everybody say हाँ ठीक है, okay? Will you say that? No, Will you like just we will stop say the why. conversation? Why? No, we will say why. Like what's the Why? special in that dress or Yeah, whatever. right. So Amita will give you one specialty. Give Amita one specialty about this resort or this place. The resort is a beach that's The resort is beach that's beach touch property. Okay. Now the question, other question which is coming, not don't think of other reason. Beach touch property तो क्या? So उसके फायदे क्या है? You understand? She is Yeah. going to explain you a little more. Now, Sajal, tell me beach touch property में what kind of supporting details she would tell you. तो इसमें मजा क्या है? Beach touch है तो क्या क्या कर सकते हैं या क्या? What more details you want to know about beach touch? So if it's a beach touch, you can, like you can have a sunrise and sunset. You can Yes, see it yes. like Sunrise you and can sunset नहीं होता है, एक ही मिलता है. a Yeah, sunset. Sorry, sunset, not sunset. yeah. Sunset. On the west coast we see the sunset. Yes, no problem. Sunset. Yeah. हाँ. And beach touch And है तो it क्या is, कर सकते हैं? and you can have a lots of like you can have sacks. You can go on activities also. You can do in the beach and all. Uh-huh. Uh-huh. Right. So And seniority. yes, Divya. The seniority. See, Scenery. scenery. Yes. So it's a beach touch property. Property beach को है. मैं तो बीच में जाके भी एंजॉय कर सकती हूँ. लेकिन प्रॉपर्टी बीच टच होने के फायदे क्या है? You need to understand that. Explain me. Not just beach के फायदे. I'm just saying property beach के बाजू में उसके फायदे क्या है? प्रॉपर्टी so दूर होता for था तो 1 किलोमीटर no, दूर. so from if the property is near beach touch, you can have the Ah, like she said, like it's very good, scenery is good, and you can have that movement of your enjoy movement. You can have whatever if you're seeing sunset, you can have that, and it's from very your easy to room. You can say that. है yeah ना? from your rooms. Yeah. Yeah, you can have some amazing views from your room. मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा कि तुम अपने बालकनी में हो या सी फेसिंग रूम्स जनरली होते नहीं है सी फेसिंग बट जनरली नॉर्थ साइड फेसिंग होते हैं बट स्टिल okay you can say that there's a seaside restaurant you can enjoy your meals next to the beach या फिर accessing the property is easier आपको कहीं गाड़ी लेके निकल नहीं जाना है got it yes all right then what is the other reason Amita that you can give them to visit this property और क्या This कारण हो सकता है resort. So this हाँ, resort is a perfect fit for the family for a family trip. perfect stop okay Divya what do you think what should you say next this resort is perfect for a family trip ऐसा क्यों बोल रही है वो उसने क्या और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ऐसा क्यों बोल रही है क्या रहेगा इसमें what are you Because expecting family के लिए perfect रहेगा because of the children might be happy playing in the हाँ water, the way. हाँ Then also हाँ the adults can also enjoy with them, as well as right there will be some nice seafood to eat right around. देखा अभी दिव्या पहुंच गई वो रेस्टोरेंट में सी फूड बी फूड की बात करें सो शी इज मेंटली देयर दिस इज व्हाट अमिता एज अ राइटर इज डूइंग सो दैट द रीडर एक्चुअली एंटिसिपेट्स कि आगे क्या होने वाला है इट्स परफेक्ट फॉर फैमिली तो दिव्या इमेजिन दैट चिल्ड्रन एडल्ट्स बीच है तो खाना खेलना कूदना एवरीथिंग हैज टू बी समथिंग व्हिच इज amazing for every individual okay so that kids play area hai swimming pool hai probably I don't know I'm just we are just expecting the next thing to be the details of how it is important for a family yes connected to the family adults relax kar sakte hain maybe spa hai maybe some games hai entertainment hai food is amazing okay you can actually keep a watch on your kids when you are enjoying food है ना ऐसा कुछ हो सकता है right so these are the two reasons that she gave me okay yes Pooja are you there in Yes, ma'am. good I've recorded so you have to just check the first 20 minutes but still we are going to do the Yes, ma'am. next one Thank you. now come to this university education should be free for all students yes I agree
कंप्लीटली एग्री। यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एवरीबडी शुड एग्री, बट हम लोग एक एग्जाम्पल है। अगर किसी का ओपिनियन यस है तो वो कैसा लिखेगा? फर्स्ट थिंग, व्हाई? गिव मी वन रीजन, एवरीबडी think of one reason why it should be free. So that people should not take any loans and हाँ, in the so pressure of loans for education. right, so don't say people, so there is generic लिखना, there is no pressure of education loans। अभी तुम education loans क्यों होते हैं, क्यों होते हैं education loans? तो थोड़ा और Because background दो the इसके। education is quite expensive in case of the हाँ, fees, like yes, yes, engineers, doctors. right, तो थोड़ा सा background उसका दो। So you can say most of the, सारा का सारा नहीं ना, most of the, Most, yeah, yes. हायर सेकेंडरी जो भी है, हायर ओके एजुकेशन जो भी कोर्सेज होते हैं ना, दे आर एक्सपेंसिव। कितने एक्सपेंसिव होते हैं, कितने So एक्सपेंसिव? it's depend upon the course, which म्यूट, course you दिव्या are म्यूट। doing. हाँ हाँ, So it's कितने depend upon the एक्सपेंसिव? courses, which हाँ, तो courses यू टू are you गिव एन going to do. एग्जाम्पल। ओके, इतने एक्सपेंसिव थे, इट इज नॉट अफोर्डेबल ओके फॉर एन Everyone. एवरेज Oh, फैमिली जो होता है ना, मिडिल क्लास या एवरेज middle class इनकम। family. हाँ, एवरेज इनकम वाली फैमिली को इट इज नॉट अफोर्डेबल। इसीलिए लोग क्या करते हैं, एजुकेशन लोन्स लेते हैं, है ना? सो दिस इज हाउ यू मेक अ स्टोरी। ओके, देयर इज Yeah. नो प्रेशर ऑफ एजुकेशन लोन्स। ये उसका कंक्लूजन हो गया। क्या है ये क्या है Conclusion. कंक्लूजन? लेकिन उसके पहले बैकग्राउंड है। तो मेन स्टोरी कहाँ से शुरू होता है? फ्री क्यों होना Most. चाहिए? सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, ओके, एक्सेसिबल फॉर ऑल। एंड देन ये इसका स्टोरी है। मतलब एक्सेसिबल फॉर ऑल मतलब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हायर सेकेंडरी जो Higher कोर्सेज education. होते हैं ना, वो अफोर्डेबल नहीं होते। लेकिन क्या अंबानी को अफोर्डेबल नहीं होते हैं? नहीं, for the नहीं, poor No. people. फॉर द From एवरेज destitute इनकम background. Average. फैमिली। हाँ, एवरेज या बिलो एवरेज, एवरेज एंड Yeah, like बिलो एवरेज, below average. मतलब पुअर ओके इनकम फैमिली को। ओके, और इसीलिए क्या करते हैं, दे माइट रिसोर्ट टू, एक तो वो एजुकेशन लेते नहीं है ना, तो इसकी Or they वजह से क्या just होता है, quit studying. हाँ, सो दे क्विट स्टडिंग या फिर दे टेक एजुकेशन लोन्स। ठीक Loans. है, एजुकेशन लोन्स में फिर अच्छा ही है ना, एजुकेशन लोन्स रहते हैं, नहीं नहीं, हायर नहीं. इंटरेस्ट होता है उसमें, राइट? एंड देन Yes. पेइंग ऑफ दीज लोन्स इज कम्बरसम। कम्बरसम मतलब कंबर तुट्टे। याद रखना ये, ओके, तो Very इंग्लिश का good. वर्ड है Yeah. कंबरसम। ओके, तो मैं याद रखने के लिए मैंने बोला कंबर तुट्टे, मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है ये किसी के लिए, Yeah, it's या too बहुत much hectic. हाँ ट्रबलसम होता है। ओके, सो अगर इफ, अगर ये हम लोग का हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किया नहीं किसी ने फ्री, अगर फ्री होता है तो फिर प्रेशर नहीं लोगों का होगा एजुकेशन लोन का, और क्या हो जाएगा इसकी वजह से, They will be like एवरीवन, studying more, like they will हाँ, be like focus इसकी on वजह से, studies. Performance issue नहीं होगा. हाँ, एवरीवन हु विशेस टू स्टडी, इसका मतलब फ्री Become है, more. इसका मतलब सब लोग नहीं जाएंगे, बराबर ना? Yeah. यू अंडरस्टैंड? एवरीवन हु विशेस टू परस्यू हायर एजुकेशन कैन कंटिन्यू। फिर इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा लोग पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा आगे? Tough competition again. You will have job. You won't have jobs. निगेटिव क्यों पूछ रहे हो, क्यों निगेटिव क्यों बोल रहे हो? Negative Not होता like है. that. पॉजिटिव, It Ah. will वो be favor like में the बोल रहा है. income of the country हाँ will increase. हाँ, सो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग का लिटरेट पॉपुलेशन होगा, और लिटरेट Literacy. पॉपुलेशन की वजह से, लिटरेसी रेट्स इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या अच्छी चीजें होंगी, और आगे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। कैसे? हाँ, Economy boost होगा. Be a benefit for the इकोनॉमी, country's economy. Yes. यस, इकोनॉमिक बूस्ट। एंड देन खुद के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई And होता है, Yeah, बराबर ना? मेरा standard of जितना, living increases. ऐसा अजम्पशन है, जितना मेरा एजुकेशन ज्यादा, इट इज अगेन अनदर डिबेट। ओके, जितना एजुकेशन ज्यादा, इसलिए हम लोग एमबीए करते, यहाँ करते, क्या करते, पीएचडी करते हो ना, जगह क्या क्या करते हो, राइट? एंड लेकिन yes. जरूरी नहीं है ना कि सब लोग अफोर्डेबल रहेगा। यू मस्ट हैव सीन द स्टोरीज एंड हर्ड द स्टोरीज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। चौथी पास, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, 4,000 करोड़ का। That is also, that's another debate altogether, but we can put that. Okay, so higher education is a common understanding. Higher education is equal to higher क्या, As a standard compensation, of living standard of or living भी competition. चलेगा।
ऑलराइट। और अच्छा लोग अगर अच्छा कमाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, और क्या कम होगा सोसाइटी में? अगर सबके पास अच्छा पैसा रहेगा तो क्या कम होगा सोसाइटी में? पॉवर्टी और क्राइम विल बी इन चेक। इन चेक मतलब सब कंट्रोल में रहेगा। ओके, कंट्रोल। हाँ, ऑलराइट। तो इसीलिए ये करो, फ्री करो, फ्री करो। सो वी हैव अ बिग स्टोरी नाउ। सो एक तो एक लंबा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये एक हो सकता है। बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ द अदर पॉइंट, दूसरा पैरा भी लिखना है। दिस इज ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स आई हैव रिटन। ओके, तो और क्या हो सकता है? अदरवाइज आई हैव टू कट दिस into two paragraphs. अगर और कुछ सूझा नहीं तो what else can you think of before I cut into two paragraphs? Free करो so that it is accessible for all. Or is there any other parameter? ग्लोबल लेवल पे अपना कंट्री रिकॉग्नाइज रहेगा. Sorry, can you repeat? So just thinking that globally our country will be recognized. हाँ, so you say अगर university education is free, then what will happen? You might have the global recognition. Okay, we might People attract from other parts of the country might come more talent, and है ना? see. बराबर है। So you can probably attract more talent. ओके, लोग अलग अलग कंट्री से आ सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इंटरनेशनल या रिमोट कंट्रीज, रिमोट एरियाज में भी हो सकते हैं ना, रिमोट एरियाज के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ग्लोबल रिकग्निशन, सो दैट विल गेट मोर वर्कफोर्स। वापस से पॉइंट वही जा रहा है कि वर्कफोर्स ज्यादा अच्छा रहेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। ओके, तो फिर यू शुड अंडरस्टैंड ये सारा पॉइंट्स ना यहाँ पर ये करो, ये So, uh, we put it here won't because this reflect अपना tourism भी attract होएगा? हाँ, but that is like a very far-fetched thing. far-fetched है। एजुकेशन फ्री करने की वजह से टूरिस्ट को हम लोग को इनवाइट नहीं करना है। ये So नॉट there will be टूरिस्ट, मतलब less घूमने के लिए आते हैं। corruptions and all, less हाँ, corruption. हाँ, यू कैन से दैट। ओके, ये सब इकोनॉमी रिलेटेड यू कैन से। इंडिविजुअल को फायदा क्या होगा? एज एन इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल को फायदा होता है, दूसरा गवर्नमेंट को फायदा होता है, या तीसरा सोसाइटी को फायदा होता है। सो एज एन इंडिविजुअल ये फायदा आई है. हैव रिटन दिस, है ना, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। ओके, सो आई कैन एक्सेस इट। दूसरा, गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट। मुझे फायदा क्या होगा एज एन इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? देयर आर टू रीजंस व्हाई आई एम सेइंग इट शुड बी फ्री। ओके, Free. और एक ये हो सकता है कि इफ इट इज नॉट फ्री व्हाट हैपेंस? बहुत एक्सपेंसिव है तो क्या होता है? कुछ लोग ही एक्सेस कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? जिनके पास पैसा है वो वही लोग एजुकेशन कर पाते हैं, राइट? Yeah. सो आर दे रियली So, टैलेंटेड नेसेसरीली? No, it's not like that. If we like, it's not compulsory that they are talented only. राइट, राइट। सो व्हाट हैपेंस? वी अब अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो We क्या प्रॉब्लम हो compare सकते हैं? we compare them with like they are, like we are assuming that they are talented. हाँ, हाँ। सो हम लोग को क्या लिखना है? इफ नॉट फ्री तो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन अकर? ये भी सोच सकते हो। फ्री करना क्यों जरूरी है? ओके, एंड फ्री नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? दीज आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, हम लोग हमेशा प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं ना, उसके करने के फायदे क्या है और नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू थिंक फॉर गिविंग आउट द रीजंस, व्हिचएवर साइड यू आर। But we can हाँ, write one positive effect also of not या I mean of disagreeing. Just say for example, if the education is not free, then the kids, I mean the university kids won't be responsible enough, because if you see some people, what they do part-time job and they pay their own fees of the classes. हाँ, So we can just say at a point, we see that they are a bit responsible students, because वो अपना जॉब भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपनी फीस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उठा रहे हैं. सो दैट्स अ तो पॉजिटिव पॉइंट इन डिसएग्रीइंग थिंग. तो वो हम नो, कैसे पुट करेंगे? हम लोग क्यों क्यों पॉजिटिव? हम लोग को दूसरे साइड क्यों जाना है? तुमने खून किया है, ऐसा तुम्हें नहीं, पूछा गया तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैंने नहीं खून किया। नहीं. अभी तो बोलोगे मैं हम्म. खून भी कर सकती हूँ, लेकिन क्यों तुम्हें कंफ्यूज करना है सामने वाले को? कोर्ट में एक ही अच्छा, साइड ओके. रखते हो ना तुम। Yes. ओके. हाँ, तुम डिफेंस में हो
या अपोजिशन में हो, बराबर? Yeah. Yes or no? Yes. Okay. Yes. So you have to always keep your side intact. Medhavi, you are in the wrong class. Please leave the meeting and join sharp at 4. Thank you so much. All right. So you need to understand whenever you're talking about the point, उसके सब angle से मत लिखना. Okay, अपना point क्या है वो याद रखो. This is exactly what people do and get 6.5 and 6. Because हम लोग कंफ्यूज करते हैं इसके वजह से रीडर को, भाई फ्री रखूं या नहीं रखूं, या कंफ्यूजिंग मी, राइट? तो डोंट कंफ्यूज द रीडर. अगर आपने बोला है कि फ्री होना चाहिए तो मुझे रीजंस बोलो ना. व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट द रीजंस, देयर आर टू वेज ऑफ रीजनिंग. वन, अगर फ्री नहीं रखा तो प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्री रखो ताकि उसके ये देखो फायदे. यू अंडरस्टैंड लॉजिक? समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes. ओके. सो व्हेन यू आर कन्विंसिंग योर मॉम, दिव्या, आई वांट टू गो अब्रॉड, तुम क्या बोलते हो? मम्मी पूछे क्यों, इसमें क्या है, कल्याण में करो, बेंगलोर में करो, So I'll tell दिल्ली her the में करो. benefits. देन यू से नहीं नहीं मम्मी यहाँ पर क्या है, एंड यू टॉक अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ द प्लेस, राइट? मेरा कोर्स तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो इतना ये है, वहां तो ये है, यू नो, यू टॉक अबाउट द नेगेटिव ऑफ स्टेइंग श्योर एंड डूइंग थिंग्स. एंड सेकंड पैरा बाद में क्या बोलते हो, मम्मी इज कन्विंस्ड नाउ, चलो यहाँ नेगेटिव है लेकिन वहां क्या पॉजिटिव है, राइट? नाउ यू आर टेलिंग कि अच्छा वहां पर तो ना ये भी है, इफ आई इन्वेस्ट इन दिस कोर्स, ठीक है पहला थोड़ा सा 15-20 लाख डालने पड़ेंगे, बट देन यू नो माय लाइफ विल बी सेटल्ड, मैं तुमको भी लेके जाऊंगी ना, तुम उसको ड्रीम की दुनिया में लेके जाते हो ना, Yeah. राइट? एंड दिस इज ओके बच्चा, जाओ जाओ खुश रहो, मैं मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे देती हूँ, जाओ. एंड she will allow you, ne, education लो जाओ. Okay, whatever she can do, she'll get convinced, right? So the conversations in our daily life are like this. Don't think IELTS writing is like something which is rocket science. Basically whenever you are thinking of I'm saving this, ठीक है, जो हम लोग ने डिस्कस किया है वो, basically whenever you're thinking of any issue, you need to understand, think from one perspective if you are agreeing to it या disagreeing to it. पहले तो ये सोचो. अभी सोचने के बाद तुम्हें पता चला that oh god इतना ही है, there's nothing else to support, then you should change your answer and say I somewhat agree. क्या करना है हम लोग को, बाद में चेंज करना है आंसर एंड यू से I somewhat agree. Somewhat. क्यों? Somewhat agree. हाँ, क्योंकि उसके फायदे भी है और नुकसान भी है, दोनों है. तो आई एम नॉट कम्प्लीटली सेइंग कि नहीं नहीं फ्री होना ही चाहिए, बट फ्री होगा तो ये फायदे, लेकिन इसका वो भी प्रॉब्लम हो सकता है जैसे दिव्या ने कहा कि फ्री रहेगा तो पीपल विल नॉट जस्ट टेक इट सीरियसली. ओके, पीपल विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव, है ना? फ्री तो है एजुकेशन, राइट? तो हम लोग को पैसा थोड़ी ना भरना है. there's a reason no people might take it lightly, हो सकता है ऐसा, right? Likely. हाँ हाँ. So to what extent do you agree or disagree? हम लोग ने फिलहाल क्या सोचा है? Yes, I completely agree. Yes, I agree. That's the reason I'm going to think of, if not free, what are the negative aspects? Then I'll convince the person, देखा इतने सारे negatives है अगर free नहीं रखा तो. So keep it free, okay? ताकि हम लोग को ये फायदे मिल सकते हैं. Alright? Now, I'll take you to one more. बाकी लिखना कैसा है वो तो हम लोग को 4 पैराग्राफ्स में पता ही है, बट स्टिल डू यू विल राइट वन मोर. if not free वाला जो पैराग्राफ है वो लास्ट में लिखेंगे. फर्स्ट पहले you have to convince. so from where we started, we Yes. mentioned why it should be free. No. Even before that, अगर points नहीं आ रहे ज्यादा and you think that oh in the mind map itself that your points are restricted only to 1 point or maybe like 2 points, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, I may not be able to stretch it beyond 100 odd words, 120 लिख सकते हैं, but I really need to add more, and that's where I'm going to say if not free तो क्या होगा? Correct? Okay, so but So if in the now mind that map we have itself, started, no, in the mind map, this is what the mind map was. In the mind map, we realized, So we can write from both sides, right? no, it's not both sides, it's the same side. Free नहीं होगा तो problem क्या होगा? You're not writing from both the sides. Don't get it wrong. Don't think ये मैं Okay. I am agreeing also and I'm disagreeing also. I'm just saying free नहीं होगा तो problem क्या है? That's the reason free करो. I'm still on my side only. Okay. Okay, and I'm but agreeing. Pooja, I have a Uh-huh. concern here. Yes. What's your concern? We already did a mind map. We already did a mind map. Sorry, and we started from why we want the education.
right? Now हम Knowing the mind हमारा map. एक पैराग्राफ हो ही गया, ओके। हमने एक पैराग्राफ सेकंड Are you losing your voice, or I'm probably not able to hear you? Others can hear. So Amita, now, can you repeat? and like for 10 others, bro. So she was telling like if you write like first you are agree with that, and then she wrote like you give explanation of every like global and everything. अगर मैंने वो लास्ट में लिखा तो wouldn't it suffice to the essay? That's what I meant. No, it's like Because we I'll have tell you. already written so much. No, I'll tell you. अगर तुमने पहले खाना खा लिया है और बाद में भूख लगा तो तुम वापस से सूप पियोगे? नहीं. नहीं, right? It's like starter soup, right? फिर खाना फिर dessert. That's the general understanding, right? So don't start with ice cream. Start with a starter and soup. Okay, but तुम्हें पता है कि मुझे भूख है ही नहीं जा रहा, तो तुम क्या करोगे? मेन कोर्स खाओगे ना? Yeah. So mind mapping means what? You already know in your mind while writing or while noting down those points, they are enough to stretch it to 200 words. मुझे 2 concrete points मिले हैं with the connections and explanation and reasons. मुझे उसका example सब पता है. Then you start writing कि whatever, keep it free. मेरी side देखो, keep it free. But after doing the mind map in the first 3 minutes, 5 minutes, when you do the mind map, you realize, oh, I'm not getting anything beyond this. So why not think in the first place itself, free नहीं रखा तो negative aspects क्या है? Got it? Yeah. Don't write it the other way around. Keep it free, because now you are discussing कि free नहीं रखा तो that means you are taking the other person in a negative mode. Okay, again. No. First tell him all the negatives कि वो क्यों नहीं करना चाहिए, and then tell all the positives. ठीक है? Did you understand? Of the same thing, agreement का ही एक ही side का positives and negatives लिखना है. Negative. हाँ. Don't think I have to agree also and disagree also. No, Yeah. I have to only agree and then do it. Okay, Amita, did you understand? Yeah, I very much understood. It's just that, traditional methods say I was going to write, always have written this essay, but हाँ. yeah, this is something that we can try. Yeah. So basically, we have to think of 2 paragraphs. Okay, हम लोग को 2 paragraph में information डालने के लिए sufficient points है कि नहीं? How do I understand in the mind map? When one point is there with an explanatory sentence or an example है, इसका मतलब है एक point में 50 to 60 words लिख सकते हैं. फिर और एक point है, फिर उसका explanation है, example है, another ये. तो ऐसे में जो 3-4 reasons आ गए, then I can really write 200 good words. नहीं तो फिर समझ जाओ नहीं ये इनकम्प्लीट थॉट है, आई रियली वोंट बी एबल टू स्ट्रेच. तो तभी सोचो कि नहीं अभी उल्टा पहले लिख के थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते, फ्री नहीं रहेगा तो नेगेटिव क्या है. Okay. Just one last doubt. अगर फ्री नहीं रहेगा तो क्या होगा? That I have mentioned in the first paragraph. Yes. And in the second paragraph, if I give, then why it should be free. तो उसका opposite करके ही नहीं लिखना है ना? नहीं, I mean you should sound fresh. Okay, so you should you should not really repeat the same ideas. Okay, free नहीं रहेगा तो क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं, तो फ्री रहेगा तो ये उसी के सेम पॉजिटिव नोट्स, ट्राई टू साउंड फ्रेश. ओके, हाँ. तो जैसे कि दिव्या विल कन्विंस कि यहाँ पे कोर्सेज चीप है, तो नहीं चीप है लेकिन फायदे के नहीं है, तो वहां पर एक्सपेंसिव है लेकिन फायदे के है. इट्स लाइक सेइंग द सेम थिंग. Okay, but if she can make it a little more innovative by using different words and ideas, then it will be better. Otherwise, it will be sounding similar. Okay. Men and women are capable of doing all jobs. To what extent do you agree or disagree? सारे feminists जो रहेंगे supporters बोलेंगे हाँ all men and women can do all the jobs. हाँ, लेकिन women को बोलो डीमार्ट की bags उठाए तो बोलेंगे नहीं no, फिर husband है ना या फिर बॉयफ्रेंड है ना, या फिर भाई है ना, या डैडी है ना, वो उठाएगा. दोस्त है ना, राइट. ओके, सो मेन एंड वुमेन आर कुछ औरतें अपना खुद का सामान के शॉपिंग बैग्स वो खुद ही उठाते हैं. बराबर है, यू आर राइट. आई अग्री. यस, राइट, बराबर है. सो मेन एंड वुमेन आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल जॉब्स. यस, लेट्स
for a moment agree कि yes, they are capable of doing all jobs. अभी इसको प्रूव करो. कहाँ पर तुमने देखा है कि इक्वालिटी है? कैसे पता है तुमको इक्वालिटी है? Who told you? Where did you see? Where did you experience it? Okay, तुम्हें कौन से बेसिस पे लगता है कि वो लोग केपेबल है? ऑलराइट, फिर अब तक हम लोग ये डिबेटेबल है ही क्यों कि मेन एंड वुमेन केपेबल है कि नहीं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दो. सो इंट्रोडक्शन में यू से जेंडर इक्वालिटी हैज बीन, इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? जेंडर इक्वालिटी हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिंस एजेस, राइट, where women are fighting for their rights. Okay, या फिर although men and women are biologically different, now they have come to a platform where everybody is expecting that or all the genders should have equal rights, है ना? इसलिए उनके jobs भी career wise भी उनको jobs सही चाहिए. Okay, I completely, when many people think that men and women are capable of doing all jobs, to which I completely agree. चलो, if you think you completely agree, let's for a moment do this agreement point. ठीक है, disagreement का भी कर सकते हैं. Alright, let's agree. Give me a reason to agree. आपको क्यों लगता है कि वो capable है? कैसे पता है? So basically, women's are Women's word नहीं है, capable delete of करना. Women's children's word अपने डिक्शनरी से delete करो प्लीज. हाँ, women are equal to men because as the मतलब जितना for example a house जितना men संभालता है उतना women भी तो संभालती है. तो इसको क्या बोलेंगे? एक फ्रेज For में बोलो, example, एक फ्रेज में बोलो, ये एक्सप्लेनेशन है. okay, so Why do you think women the and women? household work So the house. household work which is done by the men is, I mean, कैसे frame करूँ? I have no idea. हाँ, exactly, वही पर हम लोग का गड़बड़ हो रहा है ना. तो हम लोग के thoughts ready है, but then put in one word or phrase to start with. Yeah. So why do you believe, why do you agree men and women are capable of doing? ऐसा men और women में क्या सेम है कि वो जॉब सेम कर सकते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं? क्या है सेम? अभी अटक गई गाड़ी. क्या सेम है? Now see, till now we are talking of differences. हम लोग It's all different about the कैसे हैं? thinkings and your Yes, it's like more of the your mental willpower and everything. capacity. Okay, will power. Okay, और ये सब क्यों हुआ है अभी के जमाने में? पहले क्यों नहीं था? Why we are not talking of it? So like it was नया क्या हुआ है? लास्ट 50 years में ऐसा नया क्या हुआ है जो पहले women के पास नहीं था? so like now every पहले woman has women rights to करती थी. studies, हाँ, rights to do everything like education, right to education, absolutely right. पहले के women were not educated much. not educated. हाँ, मतलब it was like a surprising thing. अच्छा, आप स्कूल जाते हो? अच्छा, आपने कॉलेज किया है? Oh, you have a PhD in 1970s. All right, now it's not a surprising thing, it's a common thing. So right to education has changed things, right? और उसके this is the fundamental thing that you should know. This is a social change. ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुए हैं और कहाँ से प्रॉब्लम अभी चेंज हो रहा है. ये तो प्रॉब्लम तभी यही था कि women had no right to education. अभी उसको राइट टू एजुकेशन है. सो दिस इज अ सोशल चेंज. क्या हुआ है ये? सोशल चेंज. दिस सोशल चेंज हैज ब्रॉट अबाउट ओके लॉट ऑफ. तो पहले हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट फ्रेज अ सोशल चेंज विच इज नथिंग बट राइट टू एजुकेशन. इसके वजह से क्या हुआ है? ओके, वुमेन आर एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड. उसके वजह से क्या हुआ है? दे आर एबल टू compete, राइट, ऑन ऑल करियर फ्रंट्स. बिकॉज जॉब की बात चल रही है, घर की बात चल रही है नहीं. एवरीबडी अवेलेबल? हेलो, एम आई देयर? हेलो, एम आई ऑडिबल? Oh, I think I was out of network. Anybody can hear me now? Yes. Yes, I can. अच्छा, okay.
So this topic is something where people really lack knowledge. Okay, मतलब हम लोग को फीलिंग है, हम लोग को एक प्राउड फीलिंग है, ओ women can do it, it's a very feminist thought, ठीक है? बट और इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के हम लोग बहुत ये प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं, बट वी डोंट नो इसके पीछे क्या क्या कनेक्शंस है. ऑलराइट, हाउ थिंग्स आर डिफरेंट टुडे. वी आर रियली टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट आवर previous generation's life was not that easy when it comes to the female, okay, gender. So ये actually social change हुआ है. So you should actually know that yes, I completely agree. Why they are capable? Why? Why are you saying that they are capable? Because there has been a social change. क्या हुआ है? Social change. Change. Social change क्या हुआ है? Women have got the right to education. Educate. जिसके वजह से क्या हुआ है? Like they are, so they in the society they will be like same like men as women. Right. So equal opportunities. Yes, it's a platform of equal opportunity. Okay, तो अभी कुछ gender bias has reduced. मैं ये नहीं बोल सकती zero हो गया है. Okay, reduced, minimized. Okay, and there's a parity. Parity मतलब equality है अभी. Okay, when it comes to what? Competing for courses, education के लिए parity है. Okay, मतलब वही सबको equal opportunity. In fact, there are reservations. बराबर? For encouraging. Oh God. Okay, just hold on. Okay, there are reservations for encouraging क्या women education. बराबर ना? Yes. आपको scholarships है, right? आपको और क्या है? Seats reserved होते हैं job में भी female इसके लिए. Even parliament, government jobs, non-government jobs, private में, you know, there are certain reservations. Not everywhere, but yes, there are certain things. Okay. So they are now expecting that everybody should be performing equally, right? But नहीं, there's a debate. Okay, कैसे तुम आर्मी में आ सकते हो? अभी तक till now नेवी, आर्मी, okay, wherever there's a physically demanding job, वहां पर females नहीं थे अभी तक, right? But somebody who must have presented, they must have presented कि नहीं, women are, men and women are able to do it. Okay, और एक क्या है reason? We are biologically different. Okay, we are biologically different. We मतलब क्या? We मतलब तुम लोग खुद को include मत करना. Men and women, okay, both. are biologically different. So wherever there are physically demanding jobs, okay, there could be some bias. बराबर है ना? हाँ, कि मैं security head को शायद से मैं सोचिए bouncers मैं सोचूंगी शायद से males would be preferred. Army में, navy में there would be a preference. But even this is changing. The second sentence I don't agree. For example, in cricket, if you see, cricket is played by men also, but we do have a women team for cricket. Right, that's what I'm saying. There could be some bias. मैंने क्या लिखा है? There is a bias नहीं लिखा है. There could be a bias. But see the proportion. क्रिकेट में लड़के कितना खेलते हैं और लड़कियां कितनी खेलती है? Proportion देखना, है ना? तो इसलिए मैंने बोला है this is changing. Changing मतलब क्या? अभी change हो रहा है. It's a very nascent stage पे है. अगर फीमेल के टीम में कंपटीशन कितना है? मे बी 500 लोग रहेंगे फीमेल ऑल ओवर इंडिया. लेकिन मेल्स में कंपटीशन कितना है? मे बी 50,000 लोग रहेंगे those who are playing cricket. Okay, you understand? So this is changing where okay education या even they are physically getting trained. Physically train हो रहे. क्यों? They are now in army, navy, defense. इसमें भी उनका भी pilot. Okay, ये सब areas में नहीं थे, but they are capable of doing all the jobs. They have proven themselves, and there are certain people who have set the path, okay, for others. Okay, कुछ लोग ऐसे गए जिद से, you know, they have been rebelling about this. क्यों मैं आर्मी में नहीं जा सकती या पायलट नहीं बन सकती? And they, although we are biologically different, and there could be upbringing that okay, you are a woman or you are a female, so you have to do this. I think this is changing, and men and women are capable of doing all the jobs. ठीक है? इवन फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स भी मेन वुमेन कर रहे हैं. रिक्शा चला रहे हैं, ड्राइवर्स है, वुमेन ड्राइवर्स है, कैब ड्राइवर्स है ना, वुमेन शेफ है, बहुत सारी चीजें हैं. So we are capable of doing all the jobs.
ठीक है, this is one sided. Now what is the other side? No. What is the other side? No, we are not capable of doing all the jobs. कोई ऐसा बोल सकता है जो एंटी ये रहेगा, वो बोलेगा नहीं. Okay, don't. Men and women are different. भगवान ने अलग बनाया, तो why you're trying to compete with each other? You should compete in. Okay, you can actually give examples in the previous one. I forgot to give the example of this salon. You know salon, fashion designer, ब्यूटी पार्लर में कौन थे? लड़कियां थी ना पहले. अभी क्या है? सलोन हो गया. इट्स नॉट ब्यूटी पार्लर. You have men cutting your hair, है ना? मेकअप करने के लिए भी गाइज है. मनीष मल्होत्रा इज अ डिजाइनर, फैशन डिजाइनर. बराबर है. So these were considered as female dominated. Nurses were more females in the past. Teachers were considered as females in the past. Right? ऐसे एक स्पेसिफिक ये था कि डॉक्टर्स मतलब मेल. मैं डॉक्टर के पास जाके आई, मतलब तुम्हें दिमाग में आता है मेल. ओके, मेरी टीचर के साथ अपॉइंट, टीचर मीन्स फीमेल. ऐसे दिमाग में बैठा था. ड्राइवर मीन्स हैज टू बी अ मेल. ओके, ये हम लोग के स्टीरियोटाइप्स थे. क्या थे? स्टीरियोटाइप्स. बट नाउ दे आर ब्रेकिंग. हाँ, स्टीरियोटाइप्स मतलब ऐसी सोच थी, पक्की सोच थी. नाउ इट इज चेंजिंग. अभी सेकेंड थिंग, नहीं एग्जैक्टली अपोजिट. ऐसे men or women are not capable of doing all jobs. They are different. How will you say this? I don't agree. अगर कोई है no वाला, I completely disagree. How will you give this? What observations you will give? What observations you'll give? नहीं. कोई एक फिजिकल डिमांडिंग वाला एग्जांपल. हाँ, okay, we'll say that physically demanding jobs होते हैं. Okay, preference. Okay, males को दिया जाता है. Although females are there, मैं अभी थोड़ा सा उल्टा लिखूंगी, सेम पॉइंट को उल्टा लिखूंगी दूसरे ऐसे में. Although females are present, okay, they are making the mark. They are very nominal. Nominal मतलब namesake. 10-15 है, 5 है, 1% है, 2% है, ज्यादा नहीं है. Okay? जैसे पॉलिटिक्स डोमिनेटेड बाय मेल्स. बराबर. हाँ, बट है फीमेल्स रिजर्वेशन सब है होने के बावजूद डोमिनेशन किसका है? पार्लियामेंट में दिखते. हाँ, देयर इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स. बराबर. हाँ, यस. फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स, ड्राइवर्स है, बाउंसर्स है, नेवी है, आर्मी है. वेयर इज द डोमिनेशन? मेल डोमिनेशन है वहां पर. ऑलराइट, शेफ्स. ओके, इन दी रेस्टोरेंट, घर पे खाना कौन पकाते? फीमेल्स. बट रेस्टोरेंट में कौन पकाता है? डोमिनेटेड बाय मेल. राइट, दे आर नॉट केपेबल. हाँ, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ऑल जॉब्स. ओके. हाँ, यू विल से फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स ये करते हैं. यू अग्री दैट मेंटल, जहां पर ये होता है ना, मेंटल कैपेबिलिटीज या आईक्यू कैपेबिलिटीज. ओके, वहां पर दे माइट बी, बिकॉज आई वांट टू साउंड नेगेटिव, नो, तो दे माइट बी इक्वल. है ना, दोनों इंजीनियर्स है, दोनों डॉक्टर्स है, तो उनकी कैपेसिटी सही है. But we can say on emotional level, women Oh are yes, right. So emotional is पे, okay, they are different. So why you're giving them the same jobs, right? Wherever there is this caring and nurturing, ऐसे वाले jobs है. Okay, where I would say, not I, science would say, nobody would like when I would say, right? मैं बोल रही हूँ तो debate हो जाता है. So science says that, okay, females, okay, are more emotional. They're more with EQ. Okay, ज्यादा इमोशनल होता है, पचक के अंदर होने का होता है, पटक सबसे, है ना, जरा सा कुछ हुआ तो. राइट, बट अगेन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे, बट मेजोरिटी ऑफ अस आर लाइक दैट. राइट, तो EQ वाले जो जॉब्स होते हैं वो फीमेल ज्यादा होने चाहिए. IQ वाले जॉब्स फीमेल ज्यादा होने चाहिए. फिजिकल ये वाले जॉब्स ज्यादा मेन होने चाहिए. सो वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ऑल जॉब्स. ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो. ऑलराइट, पीपल आर कंसिडरिंग कि हाँ सब कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअली नेचर में और इसमें फर्क है. सो इट इज नॉट इजी फॉर फीमेल्स टू डू बॉडी बिल्डिंग. यस और नो? है. ओके, बॉडी बिल्डिंग है, नहीं बोल रही मैं, बट इट्स नॉट इजी. ओके, बिकॉज हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो अलग होता है फीमेल्स में और मेल्स में. इट इज easier for a teenage boy to build muscles as compared to a teenage girl to build muscles as bulky as a boy. You understand? ये नेचर के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं by doing other things. ऐसे किसी का मानना है, मेरा नहीं. ओके,